I am going to teach you basics of torts today, which is for SEM 5 of LLB. So let's understand how and what is torts and the basics that you need to understand before diving deep into torts. Let's understand, what do you mean by tort? Tort is derived from tortum, which is from Latin, which means twist. Okay, so what they want to say is everyone is expected to behave in a straightforward manner. We have to go straight. So in law and society, everyone has decided that this is straight, this is the legal right way to do everything. But what happens when a person decides not to go straight but go on a twisted or a crooked way to move forward? So this twisted way, they have said, or the crooked way, has committed a tort. So this is wrong actually. Okay, so it's basic, like morally we are expected to go like this, legally we are expected to go like this, but a person who takes a crooked way has done a wrong. So that is what we have called it tort. Okay, so tort is a civil wrong actually. It's not a criminal wrong, it's as a civil wrong. Okay, so what do we mean further as in tort? Let's see. Duty to respect the legal rights vested in the members of the society, and the person making a breach of that duty is said to have done the wrongful act. So let's take an example here. So let's take an example where a person X defames Y and disturbed his good name and reputation. So now Y's legal duty is that he should have a good name and reputation. No one can disturb this legal rights. But what X decided to do was breach of duty. So it was X's duty to not breach Y's good reputation. But that's not what X did. X breached that duty and defamed this person. So now Y has a legal right that he can go forward to the court and say that X has defamed me and has breached his duty to protect my legal rights. Okay, so now let's see at the definitions of how tort has been described as. Let's see. Tort is known as civil wrong for which remedy is a common law. Okay, what do we mean by common law? Which means judiciary, which is a judge, can decide. Okay, it is in judicial interpretation. Okay, so this judicial interpretation is done by the judge. There is no such act or code or law for tort. It's just what the judge decide according to how the case has been. Okay, now let's understand further. It is a civil wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages. Now let's understand what is unliquidated damages. So under IPC or BNS currently, we have punishment described for each and every crime. Okay, so it may be for 1 year or 20 years or life imprisonment. Am I right? So this is known as liquidated damages, where already the damage or the punishment has been decided by the lawmakers. But here, opposite of this is unliquidated damages, which means that no punishment, no compensation or fine amount has been decided by the law or the lawmaker. Here, like we said, it is decided by the common law, which is the judicial interpretation. How much of a damage has been caused to the legal right of a person, that much would be costed to the other person who have done the breach of duty. That is what we mean by unliquidated damages. That is all dependent on the judicial interpretation. So no amount has been decided by the lawmakers. So now let's understand further that it means not exclusively the breach of contract or breach of trust, other merely equitable obligations, which means moral obligations here. Okay,
which here this sentence actually means that under tort, breach of contract which is arised from breach of trust is not counted in this. For breach of contract, you need to go to Contract Act, which also tackles breach of trust. So this, they're differentiating between tort and Contract Act. Let's understand what Winfield is trying to say. Tortious liability arises from the breach of duty, primarily fixed by the law. They want to say is that what is fixed by the law? A legal right has been fixed by the law and a duty has been fixed by the law. Duty to care. Okay, that is what is fixed by the law. But if anyone has breached the duty of care, that is when tortious liability arises on that person. This duty is towards persons generally, and it's to everyone. It's not to specifically any particular person, but any person who has done the breach of duty, and its breach is readdressable by action for unliquidated damages. What do we want to say is that once a breach of duty has been done, you can readdress it by unliquidated damages, which is through common law by judicial interpretation. Similarly, Fraser also says that it is an infringement of a right, where infringement is as in that they have done the breach of duty of some person's legal right in rem of a private individual, giving a right of compensation at the suit of the injured party. So, the injured party can file a suit, and after that suit is filed, a judicial interpretation might be taken, and then will get compensation, which the injured party has a right for this because they have been infringed of a right. What does Limitation Acts suggest? It means that a civil wrong which is not exclusively a breach of contract or breach of trust. After the definition, these are the three maxims which are very important for us to understand what do you mean by tort. Okay, first one is injuria sine damnum. This is a maxim which means injury without damages. Okay, injuria means injury, sine means without, damnum means damages. Okay, so it means that if anyone's legal right has been injured and there has been no damages, then you can take this to court, which is actionable. Now you might think, why? How come? But this is how tort works. Let's take an example. Okay, now let's understand here. If now there is a person who went to voting, who wanted to vote, okay, and this is X, okay, and there is some another person Y who has stopped X from voting. He said that you are not allowed to vote, you cannot vote, and has stopped X from voting. Okay, now vote is a legal right to any person. Okay, everyone has a right to vote, and that is a legal right. Now Y stopping X to vote, which means that X's legal right has been violated. Okay, this led to X's injury of the legal right to vote. Now let's see, X wanted to vote a person which is a third party, which is B. Okay, and even if X didn't vote, B won. Okay, B still won. Then what happened? X went to court and said that I wasn't allowed to vote. I was going to vote for B. Y said that, oh, even if when you are not allowed to vote and you wanted to vote for B, B eventually won without even you voting. So ultimately, B won. Whatever your motive was to vote, B in generally won. But that's not how the court ruled. Court ruled that even if whoever that person was, she wanted to vote, won, it doesn't mean that the legal right has been not injured. Here, voting is a legal right even if they won or didn't win. So, here X's legal right has been injured and Y was compensated. So, this is the case of Ashby versus White. Similarly, voting right was prohibited. Now, let's understand damnum sine injuria. So,
It means damages without injury. Where here, there are some damages done here. Earlier, there was no damages. As we said, B eventually won. Whatever X wanted to do, B eventually won. And X wanted to vote for B. So there was no damage as such. Just because if X didn't vote and B didn't win, that was not the case. There was zero damages. So here, there are damages, but there is no legal injury. There is no legal right that has been infringed. So damages without injury. This is unactionable under tort. Okay. How? Let's see. Okay. Let's understand. There is a school. Okay. This school, in the school, there was a teacher named Y. No, let's take Z. Okay. There was a teacher named Z. He used to teach students, of course. So what this teacher decided, that I want to open my own school. So right besides this school, this teacher opened his own XYZ school. Now what happened, this teacher was actually really good. So people and students, their parents took the students to this new school, and new parents also took admission in this school because this was a very famous school. Everyone was going over here. So yeah. Now what happened, because he opened the school right beside this school, people stopped going to this school, and now students were very less, they didn't have the money, so they sued this XYZ school and said, just because he opened the school right beside me, I have lost money. He has lost money which went down. Okay, so here damages were loss of money, but there was no legal right involved. Anyone can open a school besides a school. There is nothing wrong done by Z. Everything is right. So the court decided that there is damages, but there is no legal injury here. So there is no case. This is unactionable. You can't take an action over this. This is the case of Gloucester Grammar School, where teacher decided to open a new school, became very famous. Now let's understand ubi jas ibi ridum, where it means where there is a right, there is a remedy. Now let's understand that. As I've said here, if you can see, damages means loss, damages means compensation. These both are not an essential part of tort. What is essential is the injury. Okay, this is very important. Before we understand the third maxim, let's dive into two conditions essential for torts that needs to be satisfied. Okay, there must be some act or omission on the part of the defendant. So in any crime or anything that is done wrong, there should be some act or an omission of an act, where a person was supposed to do an act but didn't do. That is what you mean by omission. An act is what a person isn't supposed to do but did that. So that is one condition that needs to be satisfied. And the next condition is act or an omission should result in legal damages. So even if a person decided to do an act or an omission but which did not lead to a legal damage, there is no tort. But if it leads to a legal damage, there is torts. There is a wrong happening, so you can take an action over it. Act which is not supposed to do, example defamation, trespass, false imprisonment. Omitted to do an act which you are supposed to do, which is negligence. So it's a doctor's duty to take care of that person, but if the doctor didn't take care of that person, caused negligence. That is what is omission. Now let's understand legal damages. Plaintiff has to prove that there has been a legal damage caused to him. So now here, the right to prove that there has been a legal damage, plaintiff has to say that this is what has happened to me, and this is how there has been a damage to my right, and you have to give me some remedy over it. So in depth I have written about this case of Ashby versus White. Let's understand it. Plaintiff, who was an eligible candidate to vote but was not allowed to cast his vote by the returning officer, the defendant, no loss was caused because
of refusal by the defendant as the candidate whom he intended to vote won the election. House of Lords has decided that defendant was liable when the plaintiff brought a suit against the defendant, as if the plaintiff has a right, he must be permitted to. There is another case which is Bhim Singh versus State of Jammu and Kashmir. The plaintiff, who was an MLA of Jammu and Kashmir Assembly, was wrongfully detained, by the police when he was going to attend the assembly session. He was not produced before the judicial magistrate within the prescribed time because of this. He was deprived of his constitutional right. So, under 24 hours, the person who was arrested needs to be appeared before the judicial magistrate. This person was not. So here, constitutional right was deprived of this person to attend the assembly session, and also there was a violation of fundamental rights of personal liberty, which is guaranteed under Article 21 of the Constitution of India. Therefore, he was awarded with the compensation of rupees 50,000 rupees, along with this release from jail. Now, let's go to damnance and injuria. Already I've explained this, but we are just rereading it. The defendant, who was a schoolmaster, started a rival school opposite to plaintiff's school. Because of this, the plaintiff had to reduce his school fees, and due to that, he suffered loss. When he filed a suit to claim compensation from the defendant, the court held that without violating the legal rights of a person, even there is loss, it is not maintainable. So they want to say that mere fact that a man is injured by another act gives in itself no cause of action. So just because किसी ने आपको इंजर किया है, इसका मीनिंग ये नहीं हो जाता हर वक्त कि आपके पास उसका राइट है कि आप उसको एक कॉज ऑफ एक्शन ले लो. हर वक्त कंपलसरी नहीं है. वो एक्शन डेलिब्रेट होना चाहिए, एक लीगल इंजरी होनी चाहिए, और अगर कुछ क्लेम नहीं है लॉ पे तो फिर आपके पास तो कुछ नहीं है, और फिर उसके बाद भी डेलिब्रेट के साथ इंटेंशनल भी होनी चाहिए. फिर उसके पास फिर राइट है कि आप अपना लीगल राइट एक्सरसाइज कर सकते हो. The test to determine whether the defendant should or should not be liable, whether the plaintiff has suffered any loss or not, but the real test is whether any lawful right vested in the plaintiff has been violated or not. अभी मतलब इनका कहना ये है कि प्लेंटिफ को अगर किसी प्लेंटिफ का लीगल राइट या लॉफुल राइट वायलेट हुआ है नहीं है, ये पहला जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके ऊपर ही या उसके आगे ही इसका केस बनता है. Let's understand ubi jus ibi remedium, which says where there is a right there is a remedy. मतलब इनका कहना क्या एक्चुअली मालूम है कि अगर आपको किसी पर्सन ने एक राइट दे दिया, मतलब लॉ मेकर ने आपको एक राइट दे दिया, किसी पर्सन ने नहीं, लॉ मेकर ने आपको एक राइट दिया है, तो वो राइट दे के उधर ही उनका काम ख़त्म नहीं हो जाता. अगर एक राइट दिया है तो उस राइट को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए और आपको वो राइट को इन्फोर्स करने के लिए वो एक रेमेडी भी दी गई है आपके लिए. नाउ it expresses the basic principle that the existence of a legal right necessarily implies the availability of legal remedy for its violation. This maxim forms the foundation of the Law of Torts, as the very object of this branch is to provide redress for infringement of legal rights. मतलब कि आपके जो लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है उसको रीएड्रेस भी करना चाहिए ना कोई, तो वो ही इस मैगज़ीन का राइट है. ये मैगज़ीन ये कहता है कि आपको रीएड्रेस करने के लिए आप ये मैगज़ीन यूज़ करो जिसमें जिधर आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है आपके पास ये रेमेडी भी है. तो लेट्स सी. If a person suffers harm due to the wrongful act of another and that harm amounts to the violation of a recognized legal right, the law ensures that the injured party receives compensation or other sustainable relief. The principle under this maxim reflects the idea that the rule of law must provide protection. जो हमारा रूल ऑफ लॉ है हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए अगेंस्ट इनजस्टिस, एंड दैट नो राइट शुड बी लेफ्ट आउट विदाउट अ रेमेडी. मतलब हर एक राइट को दिया गया है तो वो उसके लिए हमारे पास रेमेडी होना ही चाहिए. The courts have long upheld that a legal right without a remedy is meaningless. राइट देख के ही फ़ायदा नहीं है ना, रेमेडी भी देना चाहिए. अगर किसी ने उसको इन्फ्रिंज कर दिया तो क्या वो फ़ायदा अगर राइट का, अगर मुझे कुछ उसके ऊपर रेमेडी मिल नहीं रहा है तो.
तो इसी हिसाब से ये मैगज़ीन आपके लिए प्रोटेक्शन बन जाता है। ये बैलेंस करता है बिटवीन राइट एंड ड्यूटी, दैट कि नो रॉन्गफुल एक्ट अननोटिस्ड नहीं जाएगा। द लॉ मस्ट नॉट डिक्लेयर राइट्स बट ऑल्सो प्रोवाइड द मीन्स टू एनफोर्स देम। ओके, अभी हम देखते हैं हु कैन नॉट स्यू एंड हु कैन नॉट बी स्यूड। जैसे कि हमको पता है टॉर्ट इज़ एन अनकोडिफाइड लॉ, मतलब ना ही इसका कोई लॉ है, ना ही एक्ट है, ना ही इसका कुछ कोड है, ना ही ये किधर लिखा गया है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। नाउ लेट्स सी हु कैन नॉट स्यू, मतलब इसका मीनिंग है कौन हमें स्यू नहीं कर सकता। एलियन एनिमी मतलब ये टर्म, अगर इंडिया किसी भी देश के साथ लड़ाई में जाता है या कोई भी कंट्री किसी भी देश के साथ लड़ाई में जाता है, वॉर पे चला जाता है, वो इंसान एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकते। ओके, मतलब अभी इंडिया किसी दूसरे कंट्री के साथ वॉर में चला गया है, तो वो जिसके साथ वो वॉर में चला गया है वो इंसान वो सिटीज़न उस कंट्री का वो हमें स्यू नहीं कर सकता। सिमिलरली फेलिन्स एंड कॉन्विक्ट्स हमें स्यू नहीं कर सकते जो ऑलरेडी अरेस्टेड किए गए हैं, ना ही कोई बैंकरप्ट जो डिक्लेयर किया गया है कोर्ट से वो हमें स्यू कर सकता है। अभी ये देखो, अभी हमने हस्बैंड एंड वाइफ एंड कॉरपोरेशन को रेड में डाला गया क्योंकि ये थोड़े से डिबेटेबल है। जैसे कि बताते हैं, हस्बैंड वाइफ को स्यू नहीं कर सकता और वाइफ हस्बैंड को स्यू नहीं कर सकती। अभी देखो, प्रिविलेज टू हैव डिस्कशन कैन नॉट बी टेकन एज एविडेंस, मतलब हस्बैंड और वाइफ में अगर झगड़ा हो गया या हस्बैंड एंड समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में किसी के बारे में तो डिस्कशन चल रहा है, एक XYZ पर्सन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और वो XYZ पर्सन ने इन हस्बैंड एंड वाइफ का डिस्कशन सुन लिया और ये कुछ तो बहुत गंदा बात कर रहा है वो XYZ पर्सन के बारे में, और इसकी वजह से ये बंदे को एकदम ये होगा कि ऐसे कैसे बात कर सकते हैं मेरे बारे में, ये मेरा रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं, ऐसे काइंड ऑफ। तो ये इनको नोटिस भेज देता है कि अभी मैं तुम्हें कोर्ट में लेके चले जाऊँगा। तो फिर कोर्ट ये बात करता है जो भी डिस्कशन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होता है ये आप कोर्ट में नहीं लेके आ सकते, ये इनका प्रिविलेज है कि ये एक दूसरे को बता सकते हैं और उनका राइट है कि आप ये डिस्कशन में ले सकते हैं। इसे एविडेंस एज ए काउंट नहीं किया जाएगा। पर ऐसा हो सकता है कि कभी कभी चीज़ें मेंटेनेबिलिटी पे भी चली जाती है कि प्रूव करना पड़ता है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में है और ये डिस्कशन इन जनरली होता रहता है। कॉरपोरेशन को आप स्यू नहीं कर सकते, समझ में आया। चाइल्ड इन अ मदर्स वोम, अगर एक बच्चा जो मम्मी के पेट में है वो मम्मा को स्यू नहीं कर सकता, ना किसी और को स्यू कर सकता है, या एक फॉरेन स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ ना किया गया हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी कंट्रीज़ रिकॉग्नाइज़ किए गए हैं या स्टेट रिकॉग्नाइज़ किया गया है वो ही हमें स्यू कर सकते हैं। बट एक ऐसा स्टेट जिसने किसी को भी सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया वो हमें स्यू नहीं कर सकता। अभी कौन स्यू नहीं हो सकता, हम किसके ऊपर स्यू नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के ऊपर स्यू नहीं कर सकते, जो पब्लिक ऑफिशियल्स या जजेस हैं उनको नहीं कर सकते, फॉरेन सोवेरियन और डिप्लोमेट्स को हम नहीं कर सकते, एम्बेसडर को नहीं कर सकते, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को नहीं कर सकते, इन्फेंट को नहीं कर सकते, कॉरपोरेशन को नहीं कर सकते, गवर्नमेंट एज अ होल को भी नहीं कर सकते, ट्रेड यूनियंस को नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल ये रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज बाय लॉ है। या अभी ये मैरिड वुमेन जो पार्ट है वो बहुत डिबेटेबल है, बट इन जनरली मैरिड वुमेन को कर सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं है, बट कभी कभी इसको एक एक्सेप्शन की तरह लिया गया है। अभी हम लोग बेसिक में ही अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड लॉ ऑफ क्राइम्स, जो एकदम मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन करूँगी सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इन जनरली पढ़ सकते हो। बट लेट्स सी, लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज़ अ सिविल लॉ व्हाइल लॉ ऑफ क्राइम्स इज़ अ क्रिमिनल लॉ। ऑब्जेक्ट क्या है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का? कंपेंसेट द इंजर्ड पार्टी, लॉ ऑफ क्राइम्स टू पनिश द ऑफेंडर। सो इफ अ पर्सन wants to file under law of torts, that person will get compensation from the other party. But if a person wants to say, oh, money is not a problem, I want to put this person behind bars, I want to punish the offender, that is when you put it under BNS or IPC. Okay, not now IPC, but in general. What are the parties involved? So for us to write a case, we under tort we write it as individual versus individual. In law of crime, it's state versus an accused. Okay. Now legal proceedings, which is similarly civil and criminal. Balance of probabilities. What do you mean by who? In law of torts,
we have to prove, right? The plaintiff has to prove, but how much should a plaintiff prove? If even if a 0.1 difference comes, then it is decided. But in law of crimes we have higher standards of proof required. बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना पड़ता है. जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर एक पर्सन ने 40% प्रूव किया, 60% प्रूव किया सिविल में, तो चल जाएगा. बोलेंगे हाँ ये 40% का राइट डैमेज हुआ है, आपको पे करना पड़ेगा. बट अगर यही क्राइम में हुआ तो नहीं चलेगा. उनको मैक्स टू मैक्स, ऐसे एग्जांपल में बता रही हूँ, 90% टू 10% के डिफरेंस में होना चाहिए. बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इतना भी परसेंट ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई गलत हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे हिसाब से उनको कहना है. What is the intention? Intention is often not seen necessary in law of torts. Essential in law of crimes. Very much essential. Mens rea बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इधर टाइप्स ऑफ रेमेडी हमें डैमेजेस के हिसाब से मिलती है, इधर पनिशमेंट, कंपेंसेशन और इम्प्रिजनमेंट जैसी चीज़ें. अभी इधर इंजर्ड पर्सन इनिशिएट कर सकता है केस, और इधर स्टेट करेगा. इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ पार्टीज मे सर्वाइव टू और अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स. मतलब अगर ये सर्वाइव हो गया तो वो कर सकता है, या कोई उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कर सकते हैं. क्राइम में यूजुअली डेथ होता ही है. कैन बी कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्टीज. मतलब बाहर ही डिस्कस करके हम कॉम्प्रोमाइज़ करके सेटल कर सकते हैं मैटर, बट क्राइम में हम बाहर सेटल नहीं कर सकते. आपको कोर्ट में जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है. एग्जाम्पल ले रही है नेग्लिजेंट, डेफेमेशन, न्यूसेंस, मर्डर, थेफ्ट, रेप. अभी पर्पस का क्या है? इसको प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये पब्लिक इंटरेस्ट एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए है. कोई सिमिलर है कंपेंसेशन लाइबिलिटी, गिल्ट एंड पनिशमेंट, वाइकेरियस लाइबिलिटी कॉमनली फाउंड, रेयरली एप्लीकेबल. कोडिफिकेशन मोस्टली अनकोडिफाइड एंड बेस्ड ऑन कॉमन लॉ. कोडिफाइड है ऑफ कोर्स, BNS से कोडिफाइड है. So let's understand the different parts of law of torts and law of contracts. Okay. अभी ये बेसिस और डिफ्रेंसिएशन है, और ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसको एक्सप्लेन भी किया गया है बाद में. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट हम बेसिक में इसको अंडरस्टैंड करते हैं. लॉ ऑफ टॉर्ट में ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय द लॉ. इधर दोनों पार्टीज़ के बीच में होता है. अगर आपने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं है तो आप इसके अंदर आओगे ही नहीं. इसीलिए आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है, अग्रीमेंट किया है, तो ही इसके अंदर आओगे. बट ये इन जनरल है, बेस्ड ऑन कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स, बेस्ड ऑन स्टैट्यूटरी लॉ. ओके. वायलेशन ऑफ राइट एंड रेम अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज. ये स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट है, जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसी के साथ आप ये केस लड़ सकते हो. इधर कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है. इधर म्यूचुअल कंसेंट असेंशियल है. अभी इधर डैमेजेस, कंपेंसेशन के हिसाब से डैमेजेस, या एक परफॉर्मेंस कराना है आपको कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी रिटन होगा, और नहीं होगा तो कोर्ट डिसाइड करेगा. अभी ड्यूटी जो है लॉ ने फिक्स किया गया है, इधर ड्यूटी कॉन्ट्रैक्ट से फिक्स किया गया है. अभी इंटेंशन जनरली इररिलेवेंट होता है. इंटेंशन इज़ वाइटल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से एक इंटेंशन के साथ ही कर रहे हो, तो इसी हिसाब से. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट रिक्वायर्ड, इवन स्ट्रेंजर्स कैन स्यू इन टॉर्ट. मतलब कि कौन किसको स्यू कर सकता है? इधर कोई भी किसको स्यू कर सकता है, क्योंकि लीगल राइट डैमेज हो गया तो किसी को भी कर सकता है. स्ट्रेंजर भी हमारा लीगल राइट वायलेट कर सकता है. इधर सिर्फ जिनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वही. मेजर्स ऑफ डैमेजेस टू प्लेस इंजर्ड पार्टी इन पोजिशन बिफोर द रॉन्ग, टू प्लेस पार्टी इन पोजिशन एज इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन परफॉर्म. मतलब जो रॉन्ग किया गया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. इधर जो पोजीशन पे हम थे, अगर परफॉर्म किया होता तो वो पोजीशन पे लाने के लिए. इधर दोनों जगह पे मोटिव इररिलेवेंट है. राइट इधर पर्सन का इफेक्ट हुआ गया है. राइट जो कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट किया गया है वो वाले राइट के बारे में हम इधर बात करेंगे. फिर आगे पढ़ते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि डेफेमेशन, नेग्लिजेंट ट्रेसपास, ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स. इधर कैसे लिखेंगे हम? प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट. इधर प्रोमिसी एंड प्रोमिसर के हिसाब से पार्टीज. एम ऑफ लॉ कंपेंसेट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस एनफोर्स करने के लिए. ये लार्जली अनकोडिफाइड है, और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर कोडिफाइड है.